Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371-7117. Listeners calling from outside Delhi will have to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लेकर आए हैं। आज सोमवार है। कार्यक्रम में आपके प्रश्न भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444। हमारा दूसरा नंबर है 2371717106। सवालों पर चर्चा करने और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल जी। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अनुभा रोहतगी। थैंक यू निखिल। Retail inflation rises to 7% in August. Industrial production grows 2.4% in July this year. Sensex regains the 60,000 mark. Nifty settles near the 17,950 level. And rupee appreciates to 79 rupees and 53 paisa against the US dollar. खुदरा महंगाई अगस्त में 7% हुई। औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष जुलाई में 2.4% बढ़ा। सेंसेक्स ने 60,000 के स्तर को फिर पार किया और निफ्टी 17,950 अंक के ऊपर पहुंचा। रुपया मजबूती के साथ 79 रुपए 53 पैसे प्रति डॉलर। Retail inflation based on the Consumer Price Index CPI rose to 7% in August this year compared to 6.71% in preceding months. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, inflation climbed mainly due to rise in prices of food and beverages. In August, inflation in the food basket stood at 7.57% compared to 6.71% in July this year. Inflation based on CPI snapped a 3-month downward trend this month. The government has mandated the Reserve Bank of India, the central bank, to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. Yamini, we see, like we just said, it's on the rise. After 3 months of going down, the CPI inflation has gone up. What are the reasons for this? Well, overall, there has been a rise in the food prices, and which is then reflected in the CPI. Also, the crude oil prices have not come down to a level which was expected at about $75, which would have been more reasonable, but they're still at $90 to $95. So that continues to put pressure. Also, the supply chain bottlenecks continue to be one of the reasons for the increase in the inflation. That is putting pressure on the market. Also, like we just said, that of course that the inflation, CPI inflation going back to 7% rising after 3 straight months is the main reason is due to rise in price of foods and beverages. So, given the fact that the government in the past few months have taken certain steps like put curbs on export of wheat and rice and some other entities to curb this inflation, do you think more such steps are the government is going to take more such steps in the near future to bring down inflation? Well, whenever it is needed, they would put up a stop on the exports of the necessary items, primarily to ensure stability of prices in the domestic markets. This year itself, the monsoon has not been that sufficient enough to put in the requisite food production that we are looking at. Also, what has happened is that the oil prices, since they went up, that has also trickled down to the costs of the food expenses. So that has also resulted in an increase in prices.
Besides that, the sowing of the crops lately had been late and lesser than the required, which will also create a problem in terms of the overall production which is required. So these factors can affect the food prices further. But inflation going up, what kind of a pressure, or what kind of, if I may use the word pressure, what kind of a pressure is that going to put on the RBI? Because we are going to have another meeting of the NPC meeting later this month. So do you think that the RBI may be following in the footsteps of the US Fed, may go for a higher rate hike than the 50 basis points which it has done in the last two cycles? Well, the RBI would look and tread the path of balancing two challenging situations. One is of economic growth and the other is of inflation. The inflation would be targeted at a lower level, for which it would raise rates, but it would not be as aggressive as the Fed, because the Q1 figures for the GDP, which were supposed to be around 16%, have come down to 13% or so. So that does put pressure on the RBI to maintain growth. Also, the projections are at about 7.2% by the RBI. So given the quarters and the growth rates, it would like the growth to continue. There has been an increase in the bank credit, which has further fostered the growth, but it cannot be contained if the interest rates are hiked. Also, there will be a slowing pressure in the economy, and the inflation pressure would build up if the crude oil prices don't come down. और सेंसेक्स पर नजर डालें तो सेंसेक्स और निफ्टी में आज आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच दोनों प्रमुख शेयर सूचकांकों में ये बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 60,000 से ऊपर और निफ्टी 17,950 अंक के आसपास जाकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 322 अंक यानी कि 0.54% की तेजी से 60,115 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 103 अंक यानी कि 0.58% बढ़कर 17,936 पर पहुंच गया। विस्तृत बाजार की बात करें तो यहां पर भी तेजी रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.89% लाभ में रहा। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की बढ़त दर्ज की गई। और इस बीच हमारे साथ पहले कॉलर आज के जुड़ चुके हैं, गौतम सक्सेना दिल्ली से। हेलो गौतम जी, आपका प्रश्न पूछिए। थैंक यू निखिल जी, एंड थैंक यू टू एवरीवन एंड गुड इवनिंग। यामिनी जी, particularly in current economic scenario, current political and social scenario internationally, what do you think, which country or the group of countries like European Union, America, China or Russia would be the strategic partner in terms of socio-economic matters with India? Thank you. Well, in the current scenario, we can obviously see that the overall Indian foreign policy has been to keep its national interests as the top priority. Also, it has been maintaining that it would like to keep the world peace in order. So it has not been taking sides for any of the countries, whether it is Russia or China or US or European Union. It has taken strategic steps of having bilateral trade agreements with different countries, and has also expressed its interest in maintaining cordial relations with all economies. Where it has supported certain economies in economic development, it has also been critical of the US supporting the Pakistan in certain developments of their fighter planes. So overall, a very neutral stance has been maintained, keeping the national interests as supreme. And the next caller is S.K. Sharma from Ghaziabad. But before we take Mr. Sharma's call, let me have a quick look at the Sensex and the Nifty. The Sensex and the Nifty today witnessed gains of more than 0.5%. Both stock indices rose in sync with gains in the global share markets. The Sensex closed above the 60,000 mark, while the Nifty settled near 17,950 level. The Sensex climbed 322 points or 0.54% to finish at 60,115. The Nifty surged 103 points or 0.58% to end at 17,936. In the broader market at the BSE, the mid-cap index climbed 0.89% and the small-cap index ended 1% up. In the Sensex pack, 18 companies posted gains while 12 logged losses. Titan climbed 2.2%,
Axis Bank and Tech Mahindra both surged 2.1% each. On the other hand, HDFC and HDFC Bank both tumbled 0.4% and Nestle India plunged 0.3%. In sectoral indices at BSE, all 19 sectors gained. Realty sector rose the most as it added 2.2%. Basic material gained 1.7%. Capital goods surged 1.4% and the IT sector ended 1.3% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,165 companies gained while 1,428 fell. Shares of 166 companies remained unchanged. And now let us take the call from Mr. S.K. Sharma from Ghaziabad. Mr. Sharma, welcome to the program. Looks like we have lost contact with Mr. Sharma. The next caller is Mr. Ratnakar from Mumbai. Mr. Ratnakar, welcome to the program. हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। गुड इवनिंग मैडम। हाँ, मेरा सवाल है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने के बावजूद भी मार्केट जितना डाउन आना चाहिए था उतना तो डाउन आया नहीं, उसका क्या रीजन है? और दिन ब दिन जैसे जो 3-4 लाख सेशन में मार्केट तो बढ़ रहा है, तो हम तो आम आदमी तो बुलिश की साइड में ही रहता है, लेकिन मार्केट इतना भी बुलिश न हो कि जिसका कॉमन आदमी के लिए, कॉमन इन्वेस्टर के लिए उसका डर लगे। तो आपकी उसमें क्या राय है? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट्स को देखें तो जब भी अनाउंसमेंट्स आती हैं तो उसमें करेक्शंस नजर आती हैं और ये करेक्शंस नजर आई थी जब अनाउंसमेंट्स हुई थी। देखा जाए तो आरबीआई का जो रेट इंक्रीज है वो भी प्रिडिक्ट किया गया था और माना जा रहा था ये रेट इंक्रीज इमिनेंट था क्योंकि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा। दूसरा कारण ये भी था कि फेडरल रिजर्व बैंक अपना इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली बढ़ाया जा रहा था और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को मेंटेन करने के लिए और एफआईआई फ्लोज को मेंटेन करने के लिए और जो डॉलर का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। तो इन्हीं के मद्देनजर रखते हुए इन चीजों का इफेक्ट पड़ा था मार्केट पे। इस पॉलिसी को एक अच्छे तरीके से भी लिया गया था क्योंकि इसका सीधा असर लिक्विडिटी पे पड़ा था और जिसका सीधा असर इन्फ्लेशन पे पड़ना था और जो एक काफी बड़ा चैलेंज था इंडियन इकोनॉमी के लिए। जो खास तौर पे आप अभी बढ़त देख रहे हैं वो जो है बुलिश है लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शंस पे इंडिया की, जिसने काफी हद तक स्टेबिलिटी ऑफर की है इकोनॉमी को, जहां पे संसार भर में अगर आप देखें तो ओवरऑल रिसेशनरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, चाहे वो यूएस को ले लें या यूरोपियन यूनियन को ले लें या चाइना को ले लें, जिसकी वजह से भारत क्योंकि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसके जो रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो काफी तेज रफ्तार पे है, चाहे वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो या कोई भी और इंडेक्स हो जिसके अंदर उसे नापा जाए। And the next caller is from Kolkata, one of our very regular callers, Mr. Atanu Saha. Mr. Saha, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, madam. Good evening. I am a regular listener of Money Matter also. Money Matter, and sometimes I download it from its resource, All India Radio website. Anyhow, my question is, ma'am, what is gross national product and how is it measured? And do you expect a moderate inflation percentage near future? Thank you. जी, gross national product output is a method of measuring output of an economy, and it includes the overall output of the economy produced by the residents of the economy and the nationals of the economy outside the economy. So both of them is included in the gross national product. As far as moderating effect of the inflation is concerned, we will see that inflation is likely to moderate as there are different steps both in the fiscal and the monetary measures being taken to contain inflation. But the biggest challenge for containing inflation or moderating inflation would depend upon the crude oil prices and the supply chain bottlenecks that continue to be there in terms of the commodities. और थाने से हमारे साथ हैं हमारे अगले कॉलर गुरुनाथ। हेलो गुरुनाथ जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका प्रश्न पूछिए। एमिली मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, मेरा सवाल है, अभी ये जो मतलब पहला कोरोना का संकट आया दुनिया के ऊपर, उसके बाद रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ,
और तीसरा भी संकट आने की संभावना है, जो चाइना और ताइवान का जो टेंशन चढ़ रहा। तो कुल मिलाकर मैडम इससे मतलब पूरे दुनिया पे इसका असर कितना पड़ेगा, और छोटे छोटे देशों पे तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई कई देशों की, और ये एक अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, फिर भी वहाँ इन्फ्लेशन इतने हाई है हो गई है, और वो तो सैंक्शन तो लगाते रहेंगे, फिर इसके मायने क्या है। और मेरा दूसरा सवाल है, ये जो हमारे देश के अभी जो मतलब हम 11वें स्थान पे तो अभी 5वें स्थान पे आ गए, उसको इंग्लैंड को पछाड़ कर हमारी फास्ट ग्रो करने वाली जो इकोनॉमी बन गई है। तो मैडम ये जो दुनिया के जो विकसित राष्ट्र है वो हमेशा हमारे ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो कार्बन उत्सर्जन के बारे में बार बार बोलते हैं। वो लोग तो पहले ही अपने नेचर का दोहन करके अपना देश को तो विकास किया, और अभी हमारा ग्रो हो रहा है, हमारा कंट्री आगे बढ़ रहा है। आप अपना प्रश्न पूछिए, आप पूछना क्या चाहते हैं? हाँ सर, ये वहाँ पर ये मतलब न्यूज में आ जाता है। थैंक यू जी। देखिए, कोरोना काल की वजह से काफी हद तक इकोनॉमीज स्लो डाउन हुआ है। लॉकडाउन्स रहे थे, उसकी वजह से अगर आपने देखा हो तो जीडीपी ग्रोथ रेट्स नेगेटिव रही हैं, और फिर रिकवरी के दौरान वो वापस बढ़ी हैं। पेंडेमिक की वजह से काफी लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए, और इसका खासा असर ओवरऑल इकोनॉमीज पे पड़ा है। रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 2 भागों में संसार बंट गया है, जिसके अंदर कुछ लोग रशिया को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग यूक्रेन को, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि काफी सारी दिक्कतें आ गई हैं, खासतौर पे एनर्जी प्राइसेस को भी लेकर के, क्योंकि सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर। जैसे आपने कहा, चाइना और ताइवान को लेकर के भी एक इंटरनेशनल डिवाइड हो गया है और एक वॉर लाइक स्थिति पहुंच जाती है, जहां पे कुछ देश एक साथ जुट होकर के दूसरे देशों के साथ लड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, और उससे काफी हद तक ट्रेड इफेक्ट होता है और ओवरऑल इकोनॉमिक सप्लाईज पे फर्क पड़ता है। जो यूएस के इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है और रिसेशनरी स्टेट का इफेक्ट है, उससे उनके सैंक्शंस लगाने पे खासा असर पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को और जो है एनर्जी क्राइसिस में या और दिक्कतों में नहीं डालना चाहेंगे। पर क्योंकि यूएस एक हेगेमनी मेंटेन करता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी में डिफाइन करता है कि वो किस रुख पे रहे, और सैंक्शंस वो अगर कोई चीज उनके मुताबिक नहीं होती तो वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाता है। हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, और जिसका प्रमुख कारण है हमारी डेवलपमेंट। हमारा क्लाइमेट चेंज की तरफ काफी कमिटमेंट रहा है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को सुनते रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और बाकी सारे सोर्सेज में कार्बन एमिशंस को कम करने की कोशिश की है, और नेट जीरो कार्बन एमिशंस की तरफ भी मूव किया है। And before we move to the next story, let me repeat the numbers on which the callers can call us today with their queries. The numbers are 2331 4444, 2371 7106. And listeners from outside Delhi will have to prefix the Delhi STD code 011 before these numbers. Let's move on to the next story, which is about the IIP numbers for July. The Index of Industrial Production, IIP, grew by 2.4% in July against 11.5% in the same period last year. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the manufacturing sector's output grew 3.2% in July 2022. The mining output contracted 3.3%, while power generation increased 2.3% during the reported period. IIP is an index which details out the growth of various sectors in the economy. The 8 core industries comprise more than 40% of the weight of items included in IIP. These are electricity, steel, refinery products, crude oil, coal, cement, natural gas and fertilizers. And now the next caller is from Mumbai, Mr. Rajesh Jha. Mr. Jha, welcome to the program. Please ask your question. गुड इवनिंग मैडम जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, एफआईज ने इंडियन मार्केट से इतना पैसा निकाला है, उसके बाद भी स्टॉक मार्केट यहाँ गिरे क्यों नहीं? जी देखिए, एफआईआईज ने कुछ समय पहले, जुलाई से पहले काफी पैसा निकाला, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने रेट्स हाइक किए थे और वहां की इन्वेस्टमेंट्स हमारी इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले ज्यादा
बेटर नजर आ रही थी। और अगर आप देखें कि जो स्टॉक मार्केट है उस पर खासा असर पड़ना चाहिए था, पर क्योंकि DIIs का सपोर्ट रहा था डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, मार्केट्स इतनी नहीं गिरी। ये भी देखा गया कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस मार्केट का और जो ऑप्टिमिज्म था मार्केट का वो भी बरकरार रहा, जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स का रुख था वो भी मार्केट्स के अंदर अच्छा रहा। IPOs का भी प्रदर्शन काफी हद तक सराहनीय रहा और जिसकी वजह से हमें मार्केट्स काफी हद तक बॉइंट नजर आई। और अब FIIs बायर्स की तरह कन्वर्ट हो गए हैं जुलाई और अगस्त के महीने में, तो जिसका असर हमें मार्केट्स में नजर आ रहा है। वापस आ गए हैं, फिर से पैसा लगाना शुरू कर दिया है। जी, एंड नाउ लेट अस हियर फ्रॉम निखिल अबाउट हाउ द रूपी बिहेव टुडे। जी हाँ, रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत हुआ और ये 79 रुपए 53 पैसे प्रति डॉलर के स्तर के कारोबार के साथ बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.7% नीचे आकर 108.17 पर था। Yamini, coming back to the index of industrial production figures which came out today for the month of July, 2.4% as against 11.5% for the same period last year. It's such a big difference. What are the reasons for it? Well, one of the important reasons has been the base effect itself, which is getting normalized, which basically means that since there was a low base, so there was a higher growth that was observed earlier, and as against now where there is a higher base, there is a lower growth. But overall there has been a slowdown in the core sectors, which can be observed in the growth of the core sectors. पवन कुमार जुड़ चुके हमारे साथ हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से। हेलो जय जी। जी पवन जी, आपका सवाल क्या है? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने 2017 में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो है वो कुछ पैसे जो है वो लगाए थे जी, तो इसमें जो है वो सर मेरे पास जो है वो 5 साल होने वाले हैं, क्या मैं उसको जो है वो जारी रखूं? और मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे ये किसान विकास पत्र होते हैं जी, तो उसमें जो है वो उसमें मैं वो जो है वो किस तरह से खरीदने चाहिए? जी देखिए, आप SIPs में जब निवेश करते हैं तब आप विड्रॉल तब करना पसंद करते हैं जब आपको एक अच्छा मूल्य मिल रहा हो, जिसके लिए जरूरी है कि आपने जिस पे निवेश किया है उसकी कॉस्ट निकाल करके और जो आप फाइनल NAV आपको मिल रहा है उसके साथ इवैल्यूएट करके देखें तो बेहतर रहेगा। मार्केट्स जब हायर नोट पे होती हैं तो बेहतर होता है अपना विड्रॉ करना, क्योंकि आपने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया था। अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है तब आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। किसान विकास पत्र के लिए निवेश करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा और वहां से आप इनको खरीद सकते हैं और इनको आपको इनकी जो निवेश की सीमा होती है वो 5 साल होती है और ये आप जो है जब निवेश करें तब आप इन्हें एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के अंदर निवेश करते हैं। Yamini, our listener, just, when he asked about whether he should be withdrawing, you said it depends on the market, how the markets are. So right now, as we see that the markets are in a kind of bull run, so how can the common man, how can the common investor take advantage of this? Well, overall, it's important to see how much profitable you're looking at and what are you satisfied with the profit or not. If they're giving you good profitable returns, it may be a good opportunity to sell off because the markets are buoyant. There may be volatility because the CPI numbers have come in, and there may be volatility because of other reasons. So one should take a chance on higher values if one can and has getting a good profit on that. But a lot of time, the common investor, when they see that the markets are in a bull run and they think that's a good, time, so they invest a lot of money or they, immediately make a lot of sell of a lot of equities. Is that a good thing to do? Well, it all depends on your objectives. If your objective is to make profits and it is an opportune time to make profits, then one should make profits because the market usually swings to a high and a low. So the lower opportunities are always good times to buy, and the higher opportunities are always good times to look at how profitable you stand and whether you want to continue because the bull run will continue and take you to a higher level, or you want to book yourself for the profit at that moment.
एशियाई शेयर बाजारों पर नजर डालें तो आज बढ़त का रुख रहा। हांगकांग के हैंग सेंग में 2.7% का उछाल आया, वहीं जापान का निक्केई 225 1.2% ऊपर आकर बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.8% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट टाइम्स सूचकांक लगभग 0.4% ऊपर आ गया। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यूरोपीय शेयर बाजार आज अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान लाभ में रहे। लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैक 1.3% फायदे में रहे। वहीं जर्मनी का डेक्स भी 1.6% वृद्धि के साथ कारोबार कर रहा था। यानी आज हमने देखा कि जो हमारे मार्केट्स रहे, एशियाई बाजारों की बात करें या भारतीय बाजारों की बात करें, तो पूरी तरह से एक हरियाली सी छाई हुई देखी हमने। इसके पीछे मेन कारण आप क्या मानती हैं? जी देखिए, ओवरऑल मार्केट इकोनॉमीज रिकवरी पे है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काफी हद तक 90 और 95 के आसपास हैं, जो एक बेहतर स्थिति है उसके मुकाबले जो जहां पे वो हायर वैल्यूज पे थे, 105 या $139 पे भी पहुंच गए थे। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, उसका चैलेंज थोड़ा कम हुआ है और मार्केट्स में क्योंकि रिकवरी है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट नजर आया है। You mentioned the crude oil prices, so let's take a look at what the prices were today. Global crude oil prices today rose more than 0.5% amid tight supply, struggling to meet demand. The crude prices rose also amid reports of obstacles for Iranian nuclear talks and an embargo on Russian oil shipments. In intraday trade, Brent crude was trading at $93.60 per barrel, while WTI crude prices were at $87.35 per barrel. Yamini, we saw just now, like I read, that there is a tight supply right now, and OPEC has already cut down 100,000 barrels per day. Given the fact that growth is slowing in China and because of the energy Russia-Ukraine war, what kind of an effect is it going to have? Can we see the prices coming down further, or will volatility continue? Well, there is an overall situation of slowdown in most of the economies. There is a serious concern about stagflation in the US economy. Again, recessionary state of affairs in the European economy and a slowdown in China. Also, UK is facing a higher inflation, a 40-year high in US as well, highest in the UK as well. So which does put the central banks into pressure of increasing the interest rates. Since most of the economies are likely to see a slow growth and a stagflation situation, we don't see a increase in the demand for oil. Also, OPEC would like to book its profits because it has had difficult times during the COVID period where it has had to had losses. So while it will keep its supply restricted and make maximum out of it, also especially because of the Ukraine-Russian crisis, I don't feel that the prices will come down anytime soon. And coming back to the industrial production, the point, do you think that the government has already, given PLI scheme? If you look at the PLI scheme, it has been extended to a lot of sectors to encourage growth, to encourage Make in India program. So do you think that is another area that the government will look into? There are some reports that the government might be extending this PLI scheme to some other areas. Well, yes, the PLI scheme was primarily to promote manufacturing in the economy. It has been recognized that India has become one of the services hub, but it has not been able to establish itself in the manufacturing sector. And to promote that, the government actually tried to bring about different schemes, which includes this PLI scheme. And thereby, many sectors have been brought in the PLI scheme primarily to promote the manufacturing base in the economy. और सोने पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 190 रुपए की बढ़त से 50,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1,585 रुपए की मजबूत बढ़त से ऊपर आकर 56,635 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,739.80 प्रति औंस पर था। चांदी भी ऊपर आकर $19.04 प्रति औंस पर थी। And before we close, a reminder of the headlines. Retail inflation rises to 7% in August. Industrial production grows 2.4% in July this year. Sensex regains the 60,000 mark. Nifty settles near the 17,950 level, and rupee appreciates to 79 rupees and 53 paisa against the US dollar. यामिनी जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने और हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
And with that, we end this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters, and later in the day at 6:30 p.m. with another edition of Market Mantra. Do join us then. Till then, from the whole team of Market Mantra, this is Anubha Rohatgi and Nikhil Shukla saying bye-bye. Market Mantra. Market Mantra. Market